सर्वम अन्य परित्यज्य शरीरम पालियेदतः, यानी सबसे बड़ी प्राथमिकता शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा ही है। In the past 7 years, the government has been holistically strengthening the health infrastructure, taking care of preventive health, curative health, and well-being of Indians. Through the provision of affordable and accessible healthcare services, millions of Indian citizens have been saved from the poverty trap caused due to high healthcare expenditure. Here are few steps taken in the recent times to strengthen the health sector in the long term. प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। Prime Minister Modi announced the implementation of a major campaign to revolutionize the health sector, leveraging the power of technology in the form of the National Digital Health Mission. The National Digital Health Mission will enable every Indian citizen to have a health card and completely digitize the health records of all citizens. This will enable citizens to easily access all their health records in one place and act as the health account of every citizen. Till now, 11.9 lakh health IDs have been generated and 3,106 doctors and 1490 facilities have registered on the platform. हम देख रहे हैं कि देश के हेल्थ सेक्टर में जहां जमीनी स्तर पर बदलाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है एक्सेस, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच। To develop capacity of primary, secondary and tertiary healthcare systems, a new scheme called PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana has been launched with outlay of rupees 64,000 crore. This scheme will strengthen systems to cater to detection and cure of new and emerging diseases and also strengthening existing national institutions. Pertinent to note here is that this scheme is in addition to the National Health Mission. PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will also provide support for 17,788 rural and 11,024 urban health and wellness centers and establish critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions. जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी संवेदनशील व्यवस्था पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। By serving the poorest families in India with health insurance coverage of rupees 5 lakh at no cost, Ayushman Bharat has enabled even the vulnerable sections of Indian society to access quality health care. 15.9 crore Ayushman cards have been issued to beneficiaries till now, enabling them to get treated at more than 22,000 hospitals across India, including 8,800 private hospitals. 7,752 Jan Aushadhi outlets across India are providing generic medicines at affordable prices, ensuring the high and recurring cost incurred by the poor on medicines reduces significantly. Jan Aushadhi Kendras have led to savings of approximately rupees 3,000 crore to Indian citizens. कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी सिर्फ 6 एम्स ही बन पाए थे। 2003 में अटल जी की सरकार ने
6 और एम्स बनाने के लिए कदम उठाए थे। उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था, यानी 9 साल लग गए थे। बीते 6 सालों में 10 नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिनमें से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं। एम्स के साथ साथ देश में 20 एम्स जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। The government has worked strenuously over 7 years to increase the number of medical colleges and seats so as to increase the number of doctors in India. The number of premier All India Institute of Medical Sciences have also increased from 6 in 2014 to 21 now, with 15 more aims sanctioned in the last 7 years. From strengthening health infrastructure to increasing medical colleges, from expanding health insurance cover to most vulnerable citizens to creating digital repositories of health records, affordable all-round medical care is being taken to the most vulnerable citizens by the government. न आत्मार्थम नापि कामार्थम अद्भुत दयाम प्रति, अर्थात औषधियों का, चिकित्सा का ये विज्ञान जीव मात्र के प्रति करुणा के लिए है। इसी भाव के साथ आज सरकार की कोशिश ये है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित न रहे।